Yes. So yesterday, like we have seen what exactly it means by who ID and what ID. And it's really important thing, as far as it's concerned with the interview. So in the interview, this is one of the favorite question, like what exactly is the who ID and what ID. So we also have seen about the task and event. So task and event, these are the two standard objects. And by the way, these are the features of activities. So if I wanted to see the task object and the event object, so I must go to the activities. What is the navigation? Go to the setup menu and then, click on the build, customize. When you expand the customize, you will see the option activities. And inside activities, you will see the task and event object related information. So now let me take you towards the home page. Let me show you where exactly this task, if I at all created any of the tasks, so where does it's going to be listed out, or rather if I create an event, so where does it is going to be listed out. So this is also one of the interview question, whenever we create a task and whenever we create an event, so where this all is going to be listed out, where exactly you are going to see how many events have been created inside your organization, how many tasks is created inside your organization. So by the way, this task and the events, they are going to be listed out on the home tab. So you need to say that on the home tab we are going to see this. See, on the home tab, this is the first thing, that's chatter area. This is something called as chatter area. Let me minimize hide post. So this particular area, I have actually collapsed this feed. If you wanted to expand, you just click on the show feeds, rather high feed. Okay. So here, you see there are two sections. One is calendar section. The second is my task section. Okay. So these are what? These are the sections of the home tab, or rather home page, whatever you wanted to say this. So all of the event, all of the event that we are planned, that we have created, all of the events are going to be listed in the calendar section. So whenever we plan any event, whenever we create any event, the event and go is going to be listed out in this particular section, calendar section. So what I'm going to do is that, I will create a sample event and will show you how to manually create this event and how to manually create the task. Then we are going to understand how to create a task with the help of workflows, because as a part of workflow operations, we have understand that, workflow can merely perform 4 different operations. Like using the workflow, what you can do, you can send an email alert. This was the first action. Second was like, you can update a field in the same object as well as cross object field update action. Then third was like, you can send the outbound messages. That means from the Salesforce organization, we could send the message to some external organization. And then as a fourth operation, the final operation, we could plan a task, we could assign a task. So using this, say, using the workflows, we could also plan the task, So before that, before actually we end up this workflow with this creating of the task, so let me show you how manually we can create an event, we can create a task. Okay. These two are two different things, these two are two distinguished things. You must understand what is the difference between a task, between an event. Okay. Because these two are separate objects also, and these two are separate entities. Task is something different, your event is something different, and you must be able to distinguish what are the key differences between event and what exactly is the task. Okay. So the first thing was like, आपको कहाँ पे दिखेगा, where does you locate this task and event. So that is, I was saying, you need to go to home page. On the home page, on the home tab, whatever you say, you are going to see calendar section. All of the events, whatever we have created, they are going to list it out over here. And whatever the task we have created, they are going to list it out over here. Fine. So let me start with creating a new event. So there's a button already, you could see there's a button, new event. Just click on this. You could give any subject, you could give any subject to this, like, for example, let me create an event called as client meeting. I have a meeting with my client. So it is asking me for a few of the details, like location is like at the Nagpur Sadar. In the Sadar, we have decided there is some coffee shop, and then I have decided to meet my client over. What's the start date? This is the start date. What's the end date? This is the end date. So whenever you plan any event, whatever you see on this particular user interface,
Just try to observe all these things, or rather you could take a screenshot also, that whenever we plan any event, event, what the event have a subject, if you wanted to include any of the contact, you can invite, you could invite few of the people. You wanted that, and in this client meeting, there are few people from my company, those whom I wanted them, they should also come with me, so I could include them also, because add to invitees, this is what, we could actually invite them, so that they could also attend this event. So this is the first thing, event have a subject. Event, in the event we could we could invite few more peoples from the contact and from the lead also, so these are the two objects from where you could actually invite the people. Either you could invite them from the contact object, or you could invite them from the lead also. So I'm actually inviting these two people probably. This is where. And the second, if this was the second point, third thing you could say is that event have a location. Event have a location. Fourth is that event have a start date as well as an end date. Okay. And if you wanted to make it a recurring event, this is like all day event. So if you click this, it becomes a recurring event every day. On this 5 a.m. it will going to start it, and 6 p.m. it's going to 6 a.m. whatever we can make the changes over, this is something which is customized, so you could make the changes over here. So these are few of the entity with this, here you could give the descriptions, whatever. And if you wanted to have a reminder, probably like, if you wanted to have a reminder, like if you wanted to attend this, so a reminder you could also plan. Salesforce will give you actually pop-up messages, pop-up alert messages are going to be here. So I probably want a reminder 30 minutes before, because other is almost, I probably require 10 to 15 minutes to reach out there. So that's why, I'm asking Salesforce to give just me a reminder pop-up message at least 30 minutes before, so that if I'm busy with my work, so with this pop-up alert, I could probably understand, oh yeah, I have this, something I have planned. I have a client meeting, so I need this to be, at 30 minutes before I wanted this reminder. So in this is the way, this is the way actually. Let me change this date. Let's start it by tomorrow, so that we could see this pop-up alerts. Okay. And you could attach few of the files and few more things, whatever you wanted to do. So these are the entities of event. So this is the way an event is planned. What are the things? Event have a subject. Event, inside the event we could invite few more peoples from lead, from the contact, only these two, then event have a location, event have a start date, end date. We can make it a recurring event also. And then we could set up the reminders also, before like 30 minutes, one day, whatever. There are so many options over here. There's so many options over here. And then let's see what happens when I save it. Now as soon as I save this, the first thing is that you see in the calendar section, one entry has been over there. So all of the events, whenever we plan any event, whenever we create any event in the Salesforce, first of all, they are going to list it out in which section? In the calendar section. Where? On the home page. Okay, that's it. The next is, let's create a task, and let's see what are the key differences between the user interface. So let me go with this. Let's create a new task. So task also have subject. Task have due date, but task doesn't have this end date and start date and end date. Okay, task have a due date. Fine. Task does not have any locations. Task doesn't have any locations. And yes, you can make this task as a recurring task. That's a different story. Even the task also asks you that you could set up the reminders also. Okay. So what is the key differences? There are a few differences, like, task doesn't have any start date, end date, rather the task has due date. Task doesn't have any locations. These are few of the differences. So let me give any subject like, for example, sample testing task. Okay, sample testing. The due date, let me plan out with whether today's, no, not. Let me plan out for tomorrow's day, so that it will start to give us the notification by tomorrow. ठीक है, कल से ही notification आना हमको शुरू हो जाएगा. Or rather, let me take it by today itself. ठीक है. Priority is normal. You could select high, normal, whatever. No, I'm keeping it normal. A status is not started, in progress, completed, waiting for someone else, deferred means cancelled, something like that. If you could include the name of the contact and lead also over here, and then related to what, you could give some of the things. And reminders like, okay, fine. Let me go with the default selection and let me save this. So see, I created a task, but
it's being not listed out over here. Ideally, it should be there. So why? Because the option is like overdue. The option is overdue. So we are not seeing the correct option. Let me go with this today, tomorrow, this month, all open. So let me go with this month. So it will now going to list out whatever the task you created. Within this month. So they are going to be listed out. So now we could see this entry. Whether it's a completed, no. Cross means it's not completed. There it is like status is not started, sample testing, वगैरह वगैरह. So this is how, this is how manually I could create a task. And the event also. Events are going to listed out in the calendar section, all the events, and the task, there is a section called as my task section. Fine. There's a section called as my task section. Now, so same thing, same thing what we have created just right now. Now let's create this thing, let's create a task. This we have created automatically. Let's now create this with a business automation, like with the help of workflows. So let me go with this use case, like configure a workflow rule on the position object to assign a new task to the current user regarding a particular action as soon as a position is created. As soon as a position is created, we should inform this hiring manager with the pop-up alerts. ठीक है कि उसकी स्क्रीन पे ना पॉपअप जाने चाहिए, तो इस तरह से कुछ हमको एक टास्क असाइन करना है. So let's go with this and let's solve this. So let me go to the setup menu first, workflow के लिए, और create. उसके बाद में workflows and approvals में जाइए, and then expand this, go with the workflows. So these all we have already created. Let me now, create a new role. So on the position object, it's mentioned. So let me go with the position. Okay. Let me go with the position. And then I click the next button, and then rule name is like new task assignment rule. You could go with any name. I'm just following the same thing. New task assignment rule. Okay. So I wanted this to be on created only whenever a new record is being created. Okay. So rule condition, we should see whether this position में HR email ID should not be, or something else, you could decide anything. तो यहाँ पर आप इस fields के accordingly you could decide. Okay. Let me go with this option that position status should not equals to close. If this is what, if it is the position is not closed, then I wanted this rule to be get fired. So this is something, this is something which we could decide according to the different, according to different criteria, according to different requirements. I'm selecting this as areas with a very straightforward, thing in my mind. Agar position status, if it is other than closed, if something like that, so we should alert, the hiring manager for this. So let me save with this condition. Now let's assign a rule. So अब यहाँ पे देखो आप new task email, we have covered all this thing. Let's understand how to create a task. So click on this new task. Assign to whom? So we must assign to the user. Tasks are always assigned to the user. ये बात याद रखो. ठीक है. Let me show you how many users we right now have. So you can go to this manage users and users. So these all are the users. These all are the users. These all are the users, right? So out of this, we are assigning this to the one who is actually system administrator. यहाँ पर जब आप click करोगे ना, when you click this assign to, यहाँ पर आपको सिर्फ वही options नजर आएंगे जिसका जो कि या तो system admin है या फिर जिसके पास Salesforce license है. देखो वैसे तो आप देख रहे हो यहाँ पे काफी सारे users हैं. You have this Sfdc and this chatter expert, integration user, security users. ठीक है. But they are holding different licenses. ठीक है. तो अभी लाइसेंस क्या होता है, प्रोफाइल्स क्या होती है, तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. अभी कैसा ना, आप थोड़ा सा, मैं मतलब भले ही आगे का टॉपिक है, लेकिन आप समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे सारे यूजर्स डिस्प्ले नहीं होते हैं. यहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या फिर वो यूजर जिसके पास सेल्सफोर्स लाइसेंस है, तो सिर्फ उनके ही नाम यहाँ पर आते हैं. तो फिलहाल एक ही यूजर है ऐसा जिसके पास में सिस्टम एडमिन प्रोफाइल है. कौन है वो यूजर? यू कुड सी ये वाला, ये यूजर ऐसा जिसके पास में सिस्टम एडमिन प्रोफाइल है, एंड दिस इज अस, ये हम है बेसिकली. ठीक है. तो अभी तो फिलहाल एक ही नाम नजर आएगा. आगे चल के जब हम एक से ज्यादा यूजर क्रिएट करेंगे तब यहाँ पे एक से ज्यादा नाम आ सकते हैं. तो लेट मी गिव दिस, so new position assignment notification. I could give any name, just I'm doing with this
ड्यू डेट, तो ड्यू डेट क्या रहना चाहिए? फॉर एग्जांपल पोजीशन क्रिएटेड डेट प्लस 0। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो सारी फील्ड्स लिस्टेड आउट होंगी जिसका डेटा टाइप है डेट। ये इसके पहले किया है आपने, तो जब हम टाइम ट्रिगर्स कर रहे थे तब भी ये चीज देखा है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं माइलस्टोन डेट से -10 दिन पहले दूं वो भी चलेगा। यहाँ पे वी हैव दीज टू ऑप्शंस, प्लस एंड माइनस। तो माइलस्टोन डेट मान के चलिए कि 10 दिन बाद की है, तो उससे 5 दिन पहले से पॉपअप अलर्ट आए तो वो भी चलता है। कुड सिलेक्ट -5। ऐसा भी दे सकता हूँ कि माइलस्टोन डेट, जैसे मान के चलिए कि आज 23 तारीख है, 30 तारीख अगर माइलस्टोन डेट है इसकी, तो उससे एक 5 दिन पहले यानी 25 तारीख से अलर्ट आने चाहिए। तो दिस यू कुड प्लान। या फिर जैसे कि मान के चलिए कि रूल ट्रिगर, मतलब जब रूल बन रहा है तो वहां से नहीं, वहां से उससे कुछ नहीं, बट हाँ पोजीशन क्रिएटेड डेट, जिस डेट से पोजीशन क्रिएट हुई है, ठीक है, उसी दिन से अगर मैं चाहता हूँ उसी दिन से अलर्ट आने शुरू हो, तो प्लस व्हाट, प्लस अगर मैं 5 दूंगा तो 5 दिन बाद से अलर्ट आएंगे। सो मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ कि रूल पोजीशन जो क्रिएट हुआ है +0 डेज। +0 मतलब जिस दिन से क्रिएट हुआ उसी दिन। अगर मैं +1 करता हूँ तो फिर आज क्रिएट करूंगा तो कल से अलर्ट जाएंगे। अगर मैं 2 करता हूँ इसको, तो फिर आप समझ सकते हो कि आज मैंने पोजीशन क्रिएट करी है, लेकिन ये जो अलर्ट जाएंगे तो ये आज से 2 दिन बाद जाने वाले। सो आई डोंट वांट दिस हैपन, रादर आई वांटेड दिस टू बी कि लाइक आज से ही होना चाहिए, तो इसलिए मैंने +0 किया यहाँ पे। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन, छोटा सा मैथमेटिक्स है, ज्यादा कोई बड़ी चीज है नहीं। सो इफ यू हैव अंडरस्टैंड, चलो इसको सेव करते हैं, आगे चलते हैं। तो वी हैव क्रिएटेड दिस पोजीशन। अभी ये पोजीशन तो हमारी क्रिएट हो चुकी है। ओके, सो अभी ये इसको मैं डन कर देता हूँ। लेट मी डू विद दिस डन, एंड इसको एक्टिवेट भी कर देता हूँ। लेट्स एक्टिवेट दिस। रूल भी एक्टिवेट हो चुका है, सब कुछ सही है। अब ये फायर कब होगा? जब यू क्रिएट अ न्यू पोजीशन टू द पोजीशन रिकॉर्ड। तो लेट्स गो टू द पोजीशन ऑब्जेक्ट, एक नया पोजीशन क्रिएट करते हैं। सो आई एम क्रिएटिंग अ पोजीशन ओवर विद द नेम लाइक न्यू टास्क असाइनमेंट रूल। ठीक है, सो विद दिस नेम, और रादर इसको पहले ले लेता हूं, टेस्ट न्यू टास्क असाइनमेंट रूल। जो हमने एक नया रूल बनाया है उसको टेस्ट करने के लिए। HR ईमेल आईडी, आई कुड गिव एनी ईमेल आईडी हियर। इट्स अ न्यू पोजीशन, एंड ये अगर पोजीशन स्टेटस क्लोज रहेगा तो आपका वर्कफ्लो फायर नहीं होगा, ये हमने अभी देखा है। सो रादर कीप इट अ न्यू पोजीशन। Hiring manager, let's select any of the hiring manager like Abhinav Sharma. Number of vacancies 10, the location is Bangalore. And opening dates, let's take it by today's milestone date. Let me go with this December 6th, like this. Minimum is anything, maximum is this one, and let me save this. Now see, as soon as I save this, अभी जैसे ही मैं यहाँ पे एक नया पोजीशन सेव करता हूँ तो इसके बैकएंड में हमारा वर्कफ्लो फायर होगा, एंड वर्कफ्लो विल गोइंग टू क्रिएट अ न्यू टास्क। तो अगर मैं टास्क में जाता हूं तो फिलहाल मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक ही एंट्री है, राइट? तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर एक और एंट्री आनी चाहिए। सो लेट मी नाउ सेव दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, दिस हायरिंग, अरे यार ये हायरिंग मैनेजर मेरे को एक और सिलेक्ट करना पड़ेगा यार, ये रूल हटाना पड़ेगा मुझको। Let me see, any one of this is not empty. Let me create a new hiring manager first of all. Okay, so let me go with like one, and and contact number is something like this. Safe. Okay, so one Kiran I have added. Let me assign this to Kiran. Now the record has been saved. तो जैसे ये रिकॉर्ड सेव हुआ है, वर्कफ्लो रूल पीछे में फायर हो चुका है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि होम पेज पे यहाँ पे टास्क में एक नया टास्क दिखना चाहिए। सो लेट मी रिफ्रेश दिस एंड सी सैंपल टेस्टिंग टास्क, राइट? इधर no, this one, new position assignment rule. This is what we have created just right now. ठीक है, this is what we have created, a new task test new task assignment rule. तो ये है आपका this is your position record जो अभी हमने create किया, test new task assignment rule. Okay, so for this position a new task has been created, new position assignment rule.
So this is the way, this is the way to create a new task. ये है वो तरीका जिससे कि ऑटोमेटिकली एक नया टास्क आप क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वर्कफ्लोज. ठीक है, with the help of workflows you could create a new task in this way. Okay, so this was all like workflows. The workflows has been completed. Let me now start with the new topic, and that's process builder. So before I actually start, anyone, if you wanted to ask anything, you could ask me. Yes, any questions on this? Yes, because I'm going to start a new topic, process builder. कुछ पूछना चाहते हैं आप में से कोई? Yes, any one of you? Any questions? Can we customize my task column? Here? Here? This is what you are asking? Yes, sir. Yes, sir. So to customize this, you must have this, you must have that Salesforce. If you see, if I go to account, here I have this force.com quick access menu, and then I have this edit column options, right? But if I go to home tab, you don't see that Salesforce quick action menu. So that force.com quick access menu is not over here. That means you cannot exactly customize this. But yeah, there is one more option. If I go to setup menu, so by the force.com, it cannot be done. But let me show you something more. So, you go to this build and customize and then home. So if you go with this home page layouts, or rather home page components, the default. So home page components. Okay, see, there are few sections, these are the standard components. So there's a task component, there's a calendar section. These two are the sections, or rather dashboard, whatever. But if you see, you don't have any edit options over here also. So once again, finally, the conclusion is that we cannot customize this, we cannot customize the way it's look on the home page. So whatever you see, the columns like date and the status and the subject, so you cannot exactly customize this, because for task and for calendar there is no edit option. So this is the way. So by both of the means, by using this navigation, or rather अगर आपको edit करना है, तो you always edit with the force.com quick access menu. But when you go to the home tab, there is no such force.com quick access menu on the right side. तो ये इस तरीके से भी नहीं हो सकता, और अगर वो तरीका नहीं है तो you can simply go with this customization also, but with the customization also it is not possible. So if you go with this home page components, and if you try to make some changes on that particular component, calendar या task, तो उसके आगे आप देख सकते हो कि edit का बटन नहीं है. That means you cannot customize anything. How does it look like? ठीक है. So this is one of the difficulty actually. What we overcome in the Visual Force page. So when we are going when we are moving towards the Visual Force, so first of all, the first thing what we are going to learn is like why we are at all learning this Visual Force page. What are the drawbacks? So one of the drawbacks that time, I used to mention is that you cannot customize the home page. Whatever the components are there, you cannot make any changes over here. And then there are so many things. You cannot customize any of the tabs homepage. When you land on the, I told you that whenever you click on any of the tab, you are initially going to land on the homepage of that particular tab. Like this is accounts home. If I click on this, I come to cases home. If I click over here, I comes to the contacts home. This is also you cannot customize. This is also you cannot customize. There is no such option called as edit layout over here. Edit layout. Edit column is separate thing. Edit layout. There's no such thing called as edit layout. If I open any of this, now I open any of the record, here I could have this option to edit the layout. See, but when I go to this home page of any of the tab, I cannot customize. This is also one of the difficulty. You cannot customize the home page. That's also one of the difficulty. And these are few of the difficulties that we are going to discuss when we start with the Visual Force page. तो मैं start करने से पहले आपको बताऊंगा कि these were the limitations of declarative customization. ये जो आप अभी पढ़ रहे हो ना, this is something called as declarative customizations, where there is no programming. So with the help of all this, like declarative customizations, with the help of all these non-coding environment, whatever you have learned so far in the admin module, these were the difficulties. These are the limitations. तो ठीक है, it's really a good thing that you have asked. is आप ये आपने पूछा, काफी पहले पूछा, बहुत अच्छी बात है. So I got this opportunity to tell the answer. वैसे this is something what we are going to cover. होने वाला था, but काफी आगे होने वाला था.
चलो आज अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, तो वी एवरी वन ऑफ अस गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. So we are learning this all. Without coding, we are learning so many things, but limitations are there. ऐसा नहीं कि this is something which is जो बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए कि customizable है. No, actually it is not like. So there are certain requirements where we wanted to customize the UI beyond this. You cannot have this over here. उसके लिए आपको जाना पड़ता है विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग पे, उसके लिए जाना पड़ता है अपेक्स प्रोग्रामिंग पे. तो व्हेन वी स्टार्ट दिस हॉल, जब यहाँ से माइग्रेट करके वहां पहुंचेंगे तब उसके ड्रॉबैक डिस्कस करने वाले ही हैं हम. तो उसमें से एक ड्रॉबैक अभी आपके सामने आ गया कि यू कैन नॉट ऐड एंड रिमूव द कंपोनेंट्स फ्रॉम हियर. मोर ओवर यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस ओवर हियर. तो इसका अपना एक लिमिटेशन है, एडमिन का अपना एक लिमिटेशन है. जिस हद तक ये कस्टमाइज हो सकता है आप वहीं तक जा सकते हो. Whatever the options you are having right now, the options you can only explore that options and you cannot go beyond that. If you wanted to go beyond that, तो फिर आपको ना विजुअल फोर्स पेज पे ही जाना पड़ेगा, right? The only thing whatever left with you is going to the visual force page. तो उसके सिवाय कोई ऑप्शन नहीं बचता है, right? तो ये yes, तो to answer your question, we cannot customize any of this component. We cannot customize chat fields, we cannot customize calendar sections, we cannot customize any other sections over here. So these are some of the things that are rigid in nature. Yes, any more questions, guys? Any more questions, or should I start with the process builder? Okay, fine. If you find something, you could ask us later on this WhatsApp also. Yeah. So the next after this, once we have completed with the workflows, what is next? The next is process builder. Mainly there are three different automation tools in the Salesforce. Whenever we talk about the business automation process, there are three different tools. The most outdated thing was workflow. The second is process builder, although process builder is far advanced as compared to this workflow. But according to this announcement of the Salesforce that, from coming 2023, that means from this like 2 years after this, so they are going to even remove the process builder. So we, although we are learning it right now because अभी तो यहाँ पे 2 साल है हमको काम करने को, and this is something we should start. It's like ABCD of the automation. If you wanted to learn business automation, you should start it with the workflows, and then you should learn process builder. After you learn these two things, you can now learn this. After this learning the lightning experience and the lightning interfaces, now you could also go with the flows. So flows पे you cannot directly migrate to flow. अगर आप जाते भी हो तो it's become a really difficult component to understand. But if you have a knowledge of if you have a knowledge of workflows and the process builder, how to set up these all things, then you must find this flows as to be a easy thing. Probably some more advancement are there, yes, of course, but yeah, you could find it a certain easy to understand. So basically there are three different types of business automation tool. Workflow is the most outdated thing of them. Now the second is the advanced component, and that's the process builder. So after completing this process builder, all of you need to have a you just required to create differences between this process and the workflow rules. So the most important difference between workflow and process builder, before I actually start, let me show you. You have seen this how we set up this workflows, and आपने ये तो देख लिया कि मैं workflows कैसे create करता हूँ. If at all I wanted to create a workflows are created you need to migrate from one page to another page. So how we created a workflow. If I wanted to create a workflow example on any of the objects, so first of this is my first page. This is my first page where actually I required to select the object. And nothing else, nothing else. So अगर हम थोड़ा सा क्या कहना चाहिए कि थोड़ा सा अगर हम लोग दिमाग से सोचें, so इतना बड़ा पेज है, देखो यार, इट्स ऑलमोस्ट इतना बड़ा पेज लोड हुआ है, and it's just asking you to select एक ही पिक लिस्ट है यहाँ पे, and it's just asking you to select one object. तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्लाउड पर है और उसमें भी इतना ऐसा कंपोनेंट है, मतलब जिसमें सिर्फ पूरे पेज पे सिर्फ एक ही चीज सिलेक्ट करना है. सो इट्स सिंपली अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस. मतलब कहीं ना कहीं अब मैं आपको ड्रॉबैक की तरफ लेके चल रहा हूँ.
ठीक है। सो आप देखो कि यहाँ पहले पेज पे इतना बड़ा इंटरफेस है, इतना बड़ा पेज लोड हुआ, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस हैज बीन लोडेड, क्योंकि जैसे ही आपने पता है ना, द मोमेंट यू एक्चुअली सिलेक्टेड दिस वर्कफ्लो रूल, दिस होल पेज इज लोडेड फ्रॉम दिस, दिस होल पेज इज लोडेड फ्रॉम सर्वर। अब जब आपने न्यू रूल सिलेक्ट करना पड़ा तो ये पेज लोड हुआ, एंड इट्स आस्किंग जस्ट यू टू सिलेक्ट वन थिंग, व्हाट्स दैट, ऑब्जेक्ट। तो पूरे पेज पे सिर्फ एक ही चीज सिलेक्ट हुआ है ना। उसके बाद नेक्स्ट बटन प्रेस करता हूं मैं। So I'll enter to the next page, step number 2, second page. It will ask to give some of the rule name, some of the rule name it will ask me to, then select the criteria, something like that. And then whatever the rule condition, everything, you need to do this all in the second page. So this is the second page, then save and next. Then on the third page, you actually required to select this, whatever the action, immediate action, and then the time dependent action, whatever. So it will ask you to, do the same things. And then this is all, sorry, here we are required to select the email templates and everything. So it's like, you are actually branching from one page to another page to another page to another page. This is something like that. It's taking you from one page to another page and to another page. This is something like that. So ये इस तरह से काम चल रहा है आपका, ठीक है। वर्कफ्लो इज एक्चुअली बिग। उसके बाद फिर मैं इसको सेव करता हूँ। So I'll come back to this page. तो I could assume, ठीक है, मैं वापस आया हूँ, but at least now I could assume कि ये मैं 3 तो हो चुका था, this is my 4th page. हालांकि I am on again once on step number 3, but let me take this assumption, क्योंकि मैं वापस आया हूँ तो क्या हुआ, एक्चुअली मैं रूट तो हुआ, तो let me take this as step number 4. उसके बाद मैं इसको डन करता हूँ, I done this, and then again I need to activate this. So that's really 5, page number 5, है ना। तो ये इतना मतलब इतना बड़ी प्रोसेस है, एक वर्कफ्लो क्रिएट करने की इतनी बड़ी प्रोसेस है। इट्स अ वेरी लेंदी नेविगेशन। अब मैं ड्रॉबैक्स पर डिस्कशन कर रहा हूँ, जो जो चीजें हमने इसके पहले नहीं करी है। वी आर जस्ट फोकस्ड हाउ टू अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट द रूल्स एंड एवरीथिंग। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि चलो ये क्या क्या ड्रॉबैक्स है। तो ये आपने देखा कि फ्रॉम स्टेप नंबर 1 to 5 इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, एंड लाइक एवरी टाइम यू नीड टू लोड अ पेज, a page from this server side. So see, whenever we make any server call, it's going to like take some time. अभी इंटरनेट स्पीड पे भी निर्भर करता है कि अगर इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा आपको। बट इफ समटाइम्स इफ यू डू द सेम थिंग विद लिटिल बिट ऑफ लो बैंडविड्थ इंटरनेट, तो वहां पे दिस कुड हैम्पर द परफॉर्मेंस। तो ये एक ड्रॉबैक मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है कि आई नीड टू जस्ट ब्रांच फ्रॉम वन पेज टू अदर टू अदर टू अदर। सो एटलीस्ट वी रिक्वायर टू मेक 5 to 6 ब्रांचिंग जस्ट टू सेट अप वन रूल। So it's really an annoying fact. ये एक बहुत ही annoying fact है कि every time you require to just to select the few things, to make a selection, to deselect or something like that, you just require to go from one page to other to other to other and to other. So it's a time consuming process. So agar it was just like I wanted to create a one rule, so I require 5 branching. Let's take this as an example. Okay, I am creating one rule, so for one workflow rule I require at least 5 branchings, right? 5 branchings from a page to another page. Okay, if I'm creating 10 rules, so 10 multiplied by 5, that means my total workload will be 50 branching. ठीक है, आप सोचिए इस चीज को। So this is a time consuming process. Workflows are very time consuming, right? तो अब हम चलते हैं process builder पे। तो how does process builder looks like? The first difference between the workflow and the process builder is about how process builder looks like and how workflows looks like. The workflow is merely a branching from one page to another. That's you already have identified, right? Workflow kya hai? It's simply a branching from one page to another like this. If at all I wanted to create a workflow, I should do something on the first page, then I should do something on the next, on the next, on the next, like this. So workflow is what? How you create the workflow? We create the workflow from one page to another page, something like that. Now let's see how does process builder looks like. The process builder is where in the same option, the where you see the workflows. I already have told you in the same navigation, you are going to find workflows, approvals, flows, and process builder, email alerts, and everything, even the outbound messages also. So let's go to the process builder and see how does it looks like. So as soon as I click on this, as soon as I click on the process builder, the first thing what we identify over here, the first thing what should we identify over here is the interface. URL पे देखो आप, URL पे देखो what you have observed, क्या observe किया आपने यहाँ पे? From the classic you have actually being migrated towards the lightning. That means the first impression, my first impression goes like this. Workflow is something a classic part.
process builder is certainly a lightning tool. The first impression, the first impression what I could see over here, मेरे को URL से समझ में आ जाता है. You could also see the same thing. Workflow is certainly a classic part, classic tool hai, Salesforce classic tool hai, but your process builder is a lightning tool. So as soon as I go to set up the process builder, the first thing I'll be migrating automatically from classic to lightning, because your process builder is actually a lightning tool. So if it's a lightning, it's far advanced. Let's see. So with this, it's like for the first time, whenever you come, whenever you come to the process builder, you are going to see this. Probably next time you won't see this whole page. So let me, click the new button. Now see, this is completely a lightning interfaces. This is a lightning box. It's the complete look and feel is completely different from the classic. Okay, so let me create any of this like sample process. Okay, give the API name. Description you could copy the same thing, otherwise you could select it. ये तीन options मैं explain करने वाला हूँ आपको, don't worry. What does it means by record change, platform event, it's invoked by another process. I'm going to explain everything. Let me just show you. अभी मैं कुछ और चाहता हूँ. I'm going to explain each and every option of this, so don't worry. Let me just create a sample process builder to show you how does it looks like. See, this is the whole page where you set up a process builder. This is the whole page. This is the whole canvas. And you don't require to go any, from this page, you don't require to go anywhere else. एक ही page पे, on the single page, on the single canvas, we are going to set up the entire process. Moreover, it's a graphical user interface tool. It's a GUI tool, graphical user interface. You see, it's like a flow chart. And how does workflow rules? वो तो हमने देख लिया है ना. वो तो हमने देख लिया है. It's like, branching from one page to another page. Every page is being loaded from server. And this is just a single page that is being loaded. Here we require to add the objects. I'm going to solve this option, so don't worry. I could add the object. Let me save this. Okay, object add ho gaya. See, object add ho gaya. Add the criteria. Everything, whatever add the criteria. So let me go with any of the criteria, for example. Count facts field. Let me do is should equals to, should not equals to, does not equals to global constant null. Save it. Criteria name, check what the changes. Save it. See, this rule has been added. Now immediate action, time dependent. Time dependent is called as scheduled action. It's one and same thing. You could on the same page, you could go for any of the immediate action as well as for the scheduled action. It's immediate. Email alerts, the same thing. Whatever you wanted to do, whatever you wanted to do, or rather like update a record. So give any name, save it. Record type. No criteria. We are going to see this, so don't worry. We are going to see this. So actually, just don't worry about this. Account number I have taken. So I added an action also, and then the same activate. सब कुछ आप पे एक ही पेज पर है. Everything is present on the same page. So this is how your workflows, this is how the process builder looks like. And this is how the process builder looks like. So this is the first difference, between this workflows and the process builder. The major difference is कि workflows का look and feel कैसा है और process builder का look and feel कैसा है. तो process builder is actually a kind of graphical tool. Process builder जो है, it's a graphical tool. तो ये जो आपने बनाया, दिस इज अ ग्राफिकल टूल. और आपका वर्कफ्लो कैसा है कि वर्कफ्लो एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है, एंड इट्स जस्ट लाइक ब्रांचिंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज. एंड देन उसके बाद में बहुत सारे डिफरेंसेस और हैं जो अभी हम धीरे धीरे रियलाइज करेंगे कि वर्कफ्लोज में देखो कि आप सिर्फ 4 ही तरह के एक्शन परफॉर्म कर सकते हो. ईमेल अलर्ट्स, एंड देन updating an record, then sending the outbound messages and assigning a new task. So these are the only 4 options that could plan.
Process builder it's merely like 8 to 11, करीब 11 से 12 operations है that we could do with the process builder. और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे. अगर क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन की मैं बात करता हूँ, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. कैन एनीवन ऑफ टेल मी दिस? ओके, चलो एक तो सामने ही आ गया. तो क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन व्हेन यू डू दिस विद द वर्कफ्लो, सो देयर आर टू कंसीडरेशंस. पहला कि रिलेशनशिप टाइप मस्ट ओनली बी द मास्टर डिटेल. दूसरा, यू शुड अपडेट द फील्ड फ्रॉम चाइल्ड टू पैरेंट ओनली. सो ये एक चीज था. बट हियर ऑल्सो हियर ऑल्सो इन द प्रोसेस बिल्डर वी कुड परफॉर्म दिस क्रॉस ऑब्जेक्ट. लेकिन जब हम क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन प्रोसेस बिल्डर से करते हैं, so there is no such there is no such thing कि आपको सिर्फ मास्टर डिटेल ही रखना है. तो the object could be related in the master detail. The objects two object could be even related with the lookup. or if there is no such relationship between the object, although in that case also आप फील्ड अपडेट कर सकते हो. और ऐसी बहुत सारी बातें हैं. मतलब जैसे वहां पे कि सिलेक्टिंग द रूल क्राइटेरिया वाज एसेंशियली इंपॉर्टेंट. जब भी हम वर्कफ्लो क्रिएट करते हैं, सो एटलीस्ट एक रूल क्राइटेरिया तो भी होना चाहिए. प्रोसेस बिल्डर में इवन विदाउट हैविंग एनी क्राइटेरिया आप प्रोसेस बिल्डर को फायर कर सकते हो. तो ऐसा ना, और ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. तो यू नीड टू गो विद दिस ऑल थ्योरी. जितना भी थ्योरी है यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट वी कुड डू विद द प्रोसेस बिल्डर. So these all are the things what we could do. और process builder से आप apex को भी call कर सकते हो. आप you could call the apex programs also by invocable. There's a method called as invocable method. When I write any program, if I make it as an invocable method, so I could call that method in the process builder also. तो ऐसे और ऐसे बहुत सारे advantages हैं. You could go with the same thing. ठीक है. तो just by today go with all the theory whatever is being written over here, so that you could have an idea how much process builder can do the things apart from the workflows. Let me now start with the use case. Straightforward. ठीक है, चलो. Configure a process to send the email notification, ठीक है, to the contact person upon creating a new contact. So whenever a new contact is being created, inside the contact object, So if someone creates a new contact, I should fire an email. On this email ID, whatever the email ID has been entered. So we should fire an email. The same thing what we have done with the workflows also. But there are certainly few differences between, the same email alert, email notification, the same process, what you do with the workflows and the process builder, they're slightly different is their process. So before actually sending the email, the first thing we must have a template. First thing, we must have a supporting template. So I must have a template for the contact object, the first thing. Let me go and see whether I have any of the template that supports the contact object. So go with this communication templates and click on the classic email template. And let me go with this skyline template. So I have for candidate, for case, for lead, for position. And as you can see, we don't have anything related to contact. So let me create a template. I'm making it text only. So let's create a template for this contact object. So make it available for the use, and it's like, new contact creation notification template. So this is the name I'm giving to this, and let me copy the same in the description also. So for the subject and everything, I have already created this template, so I could copy the same thing. This is my subject. Congratulations, this first name and the last name and everything. This is my subject, that your contact has been created successfully, everything. Now for the body part also, I already have created the content. So let me copy the same thing and just paste it over here. And here we require to make some of the necessary alignments, because this is something we already, so many times we have done the same thing. So it's something which is, we are repeating the same process once again, because it's a manual alignment process. So here is your contact details, and do whatever the necessary modifications require. This is the first thing, whenever you're filing any email, first of all, you must have a supporting email template. So because for the contact object, we don't have any template. So just now I'm creating one of the template for this contact object.
and let me make all the necessary changes whatever it require. Yeah, so it's like, one second. These two things. Yeah. So now let me save this and let's see how does it looks like. तो ठीक है, ये काफी हद तक अलाइन दिख रहा है properly. Okay, so this was the first thing. ठीक है, this is the first step. And ये आपको कहीं ना कहीं पता भी है कि अगर हम कोई ऐसा ईमेल फायर कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए तो हमारे पास उसकी टेम्पलेट होनी चाहिए. This was the first thing. Now second one additional step over here is that कि जब भी आप ईमेल फायर करते हो, ये आपका एक बेनिफिट हो सकता था वर्कफ्लो में क्रिएटिंग एन ईमेल अलर्ट. इट वाज अ पार्ट ऑफ वर्कफ्लो में जब भी आप डिसाइड करते हो कि ईमेल सेंड करना है तो ईमेल अलर्ट वाज अ पार्ट. यहाँ पर आपको एडिशनली करना पड़ता है, मतलब आपको एडिशनली ईमेल अलर्ट फॉर्म करने पड़ते हैं. अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज तो हर कोई हो रहा है यहाँ पर अभी, और आपके दिमाग में चल रहा है कि यार ये एडिशनल चीज क्या है, मतलब ये ईमेल अलर्ट क्या है और कैसे क्रिएट करना, उसका नेविगेशन तो मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, डोंट वरी. बट ये कुछ नया नहीं है अभी. कैसा है कि आपको इस वक्त थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि ये क्या चीज हो सकती है, लेकिन फिर जैसे हम इस पेज पे जाएंगे ना तब आप देखोगे कि ये कुछ ऐसा इंटरफेस है जो उसके पहले आपने देख रखा है. और कहाँ देखा है कि जैसे आप वर्कफ्लो पे आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, वर्कफ्लो में 4 ऑप्शंस होते हैं एक्शन के: सेंडिंग एन ईमेल अलर्ट, sending the outbound messages, assigning a new task, updating a record, updating a field, whatever. उसमें से जैसे आप ईमेल वाला पार्ट सिलेक्ट करते हो कि आप नया ईमेल भेजना है, तो जैसे आप ईमेल वाला पार्ट सिलेक्ट करते हो तो ये जो अलर्ट वाला पेज है ना, ये अपने आप ही ओपन हो जाता है. ये वर्कफ्लो में होता है, यहाँ पे नहीं होता. यहाँ पे आपको एडिशनली जाना पड़ता है. एक जैसे आपने फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट एन ईमेल अलर्ट, ईमेल टेम्पलेट. सेकेंड स्टेप इज टू क्रिएट द ईमेल अलर्ट, ये एक एडिशनल स्टेप है. तो ये क्या चीज है एग्जैक्टली, चलो मैं आपको दिखाता हूँ. जब मैं आपको इस इंटरफेस पे लेके जाऊंगा ना तब आपको समझेगा कि अच्छा हाँ ये तो कुछ जाना पहचानी सी चीज है, हमने इसके पहले देख रखा है. ठीक है, चाहिए तो इसके लिए मुझे ये नेविगेशन फॉलो करना है. सो लेट्स, दिस वाज द स्टेप नंबर 1. लेट मी नाउ गो विद द स्टेप नंबर 2 इज टू क्रिएट द ईमेल अलर्ट. तो ईमेल अलर्ट फायर करने के लिए अगेन यू नीड टू गो टू द सेटअप बिल्ड, उसके बाद क्रिएट में जाइए और सेम ऑप्शन जो आपके वर्कफ्लोज है उसको आप एक्सपैंड करो. यहाँ पर देखो आपको एक ईमेल अलर्ट वाला दिख रहा है ना, दिस इज, यू हैव अ लिंक फॉर ईमेल अलर्ट. सो लेट मी ओपन दिस ईमेल अलर्ट पार्ट. ठीक है, ईमेल अलर्ट का जो पार्ट है इसको ओपन करता हूँ. अभी कुछ हमने पहले से क्रिएट कर रखा है, बट हाँ हम पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं तो शायद आपको अभी नहीं समझ में आ रहा. लेट मी क्रिएट अ न्यू ईमेल अलर्ट. सी, अभी अगर मैं इस नोटिफिकेशन इस पेज की बात करूं, कुछ याद आ रहा है आपको? ये पेज कुछ याद आ रहा है जहां पर मैं आपसे 5 ईमेल आईडीज मैंने मंगवाई थी? तो ये वही पेज है, आप एक्चुअली उसी पेज पर आए हो, बट ये है कि यहाँ पर एडिशनली आना पड़ता है. तो मैंने कहा था कि आप जब इस इंटरफेस को देखोगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो ये वो पेज है. कौन सी ऑब्जेक्ट के लिए? वी आर डूइंग दिस फॉर द पोजिशन ऑब्जेक्ट, नहीं कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी. सो वी आर डूइंग दिस फॉर द कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएशन नोटिफिकेशन अलर्ट. अलर्ट इसलिए नाम दिया क्योंकि मैं ईमेल अलर्ट बना रहा हूँ. ठीक है, एंड अभी मैंने एक टेम्पलेट बनाई है इसकी जो कि स्काईलाइन पे है. स्काईलाइन पे हमने बनाया न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएशन रिकॉर्ड नोटिफिकेशन वॉट एवर. एंड यू नो दिस, आपको पता है यहाँ से क्या सिलेक्ट करना है, ईमेल फील्ड, ईमेल सिलेक्ट करना है, ऐड करना है. देन दोस 5 ईमेल आईडीज जो इसके पहले मांगी थी मैंने, यू कुड गिव मी इफ यू वांटेड. ठीक है, अदरवाइज स्किप करता हूँ अभी फिलहाल इस स्टेप को बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 6:53. लेकिन ये इंटरफेस आपको याद आया कि नहीं? पहले सिर्फ यस और नो पे मेरे को तुरंत बताओ. ये इंटरफेस देख के याद आया कि दिस वाज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ वर्कफ्लो और यहाँ पे हमको एडिशनली हम क्रिएट कर रहे हैं. ये कोई नया इंटरफेस नहीं है, बस ये है कि ये एक एडिशनल स्टेप है. ईमेल अलर्ट क्रिएट करना एज एन एडिशनल स्टेप है. ठीक है, सो लेट मी सेव दिस. So let me save this. तो देखो अब मैं स्टेप नंबर 1 जो थी मेरी, स्टेप नंबर 1 was like to create the email template that I already created. Step number 2 was to create an email alert, that is also have done. ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या था? ईमेल टेम्पलेट बनाना, आई हैव डन विद दिस. स्टेप नंबर 2 थी ईमेल अलर्ट बनाना, वो भी मैंने बना लिया. नाउ यू कुड गो एंड प्रोसीड विद क्रिएटिंग द प्रोसेस बिल्डर्स. ठीक है, चलिए तो अब मैं प्रोसेस बिल्डर की तरफ चलता हूँ. लेट मी गो विद द प्रोसेस बिल्डर, क्रिएट दिस न्यू प्रोसेस. Here I am giving this name as a new contact creation notification. अब देखो आखिरी मैंने प्रोसेस रखा है. जब मैं इसको वर्कफ्लो के लिए बनाता हूँ वहां पे आखिरी का नाम मैं रूल रखता हूँ. जब मैं ईमेल अलर्ट्स बनाता हूँ तो आखिरी में मैं नाम अलर्ट देता हूँ. और जब मैं प्रोसेस बिल्डर बनाता हूँ तो मैं आखिरी का नाम जो है वो प्रोसेस देता हूँ.
तो दिस इज माय वे ऑफ नेमिंग, यू कुड फॉलो योर ओन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें मेरी सलाह आपसे यही रहेगी कि आप जितना हो सके रेलिवेंट रखो, इसको रेलिवेंट नेम रखो, ठीक है। चलो, now you could copy the same thing in the description also. Now there are three options over here, there are three options. Let me just explain you in short कि ये कैसे, यू ऑलवेज हैव टू रिक्वायर टू गो विद दिस ऑप्शन रिकॉर्ड चेंजेस, ठीक है। हर बार जब भी आप कोई प्रोसेस बनाओगे तो आपको यही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। बाकी के दो ऑप्शंस मैं समझाता हूँ। पहला ऑप्शन है प्लेटफॉर्म इवेंट। प्लेटफॉर्म इवेंट हम तब यूज करते हैं जब हम आइंस्टीन पे होते हैं। सेल्सफोर्स आइंस्टीन, सेल्सफोर्स की वो ब्रांच है जो कि डील करता है आईओटीज के साथ, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स के साथ, ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क्स के साथ में, न्यूरल नेटवर्क्स के साथ में, और रोबोटिक्स के साथ में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में। तो आप में से जो लोग जो इस सेगमेंट में जाना चाहते हैं, अगर आगे चल के आपको इंटरेस्ट है इन सारी जो मैंने ब्रांचेस के नाम लिए अभी, कंप्यूटर साइंस की जो भी ब्रांचेस हैं ये, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटीज, न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह वगैरह। सो अगर आप सेल्सफोर्स में किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं जो इनमें से किसी चीज पे डील करता है, जैसे टेस्ला, टेस्ला एक ऐसा क्लाइंट है दुनिया में, टेस्ला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है, और बहुत सारे और। अभी इंडिया में महिंद्रा, महिंद्रा जो कंपनी है जो जिसकी स्कॉर्पियो और सब गाड़ियां बनती है, तो महिंद्रा इज ऑल्सो like into this artificial intelligence section, और recently they have come up with a new vehicle. Mahindra की एक नई गाड़ी आई है XUV 700, probably if you know this. तो Mahindra has recently gone into the research part of this, and they are now using this Salesforce Einstein for their workflows and everything. तो देखिए ये अगर आप में से किसी इस ब्रांच में जानना चाहता है सेल्सफोर्स आइंस्टीन पे, तो आपको बैंगलोर से ये कोर्स करना पड़ेगा, बिकॉज प्रोबेबली इंडिया में बाकी जगह नहीं है, बट हाँ इसकी फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, ठीक है। तो जब हम आइंस्टीन के किसी प्रोजेक्ट पे होते हैं तो फॉर एग्जांपल आईओटीज की हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है कि डिवाइसेस यूज टू कम्युनिकेट विद द डिवाइसेस, सेंसर्स यूज टू सेंड द सिग्नल्स टू द सेंसर्स, ठीक है। यहाँ पे कोई ह्यूमन के इंटरेक्शन नहीं होता है। वन सेंसर, one particular body of electronics gives the signal to other body of electronics, and based on that communication they used to have some certain decisions, right? Based on that a certain process is automated. So whenever you are on to the Einstein process, तो उस वक्त ये जो आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं मैसेजेस, डिवाइसेस, थिंग्स एंड सर्किट्स एंड व्हाटएवर, that kind of message is called as platform event, ठीक है। तो when you are on to the IoT sort of thing, so you will go with this. When you are working with the Salesforce Einstein, probably you will select this option. Then third is like it's invoked by another process. So it's one of the difference between process builder and workflow is that one workflow cannot call another workflow. You cannot have the chaining process of the workflows. एक workflow दूसरे workflow को call नहीं कर सकता, but one process can call one process builder, one process builder can call another process. One process can call another process. So whenever you wanted this to be happen कि एक process builder दूसरे process को call करे, you should go with the third option. It's invoked by another process. ठीक है। So this is certainly another difference between the workflows and the process builder. But we don't are going to have any of the example on these two options because we don't have Einstein set up with us. Moreover, we are not working in such a complicated use case where one process actually requires to call another process. Always, always we are going to select this option, a record changes, right? Okay, a record changes. So yeah, go with this and save it. Now you are onto over here, and everything whatever you wanted is going to be done in the same page. 1 second guys. Yes, so the first thing is to add the object, ठीक है। हमें ऑब्जेक्ट ऐड करना, तो बिकॉज वी हैव क्रिएटेड दिस ऑन द कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट, हमको कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट पे टाइप करना, तो जस्ट COT इनिशियल्स टाइप करो आपको पूरा ऑब्जेक्ट का लिस्ट मिल जाता है। अगर वो भी नहीं करना है तो जस्ट गो विद दिस लिस्ट, यू आर गोइंग टू गेट द लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेल्सफोर्स। तो इट्स लाइक ये काफी easy sort of interface है। I am selecting contact only when the record is changes or record is created or edited. आपको याद होगा वहां पे 3 क्राइटेरिया होते थे, created and every time it is edited, created and any time it is edited, meeting the subsequent criteria. वर्कफ्लो में 3 चीजें होती थी, प्रोसेस बिल्डर में 2 है, ठीक है। ये सब डिफरेंसेस देखो, मैं 1 by 1 डिफरेंसेस भी आपको बताता चला जा रहा हूँ, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप ये सब चीजें नोट डाउन करके रख रहे हैं या बाद में नोट डाउन जरूर कर लेंगे, ठीक है।
तो I wanted this to be happen only on the first criteria, record is created. मैं मतलब whenever a new contact record is created, I wanted to fire one email. That's it. This is the whole plain requirement. So let me go with this, the first option, and save it. So as soon as you save this, ये तो हो गया आपका. Now you will be migrated to the second thing. ठीक है, add criteria. अब criteria दो यहाँ पे. So criteria like something what you wanted to check. तो अपन email send कर रहे हैं. So यहाँ पे हम email send कर रहे हैं. तो we should see we should see कि अगर आप email send कर रहे हो तो आपको ये देख लेना चाहिए. This is my opinion that you should see कि email send करने से पहले email field जो है वो कहीं blank तो नहीं है. So this is the thing what we could check, in my opinion. So let's go with this option. Okay, check check for the email field, FEILD, email field. So this could be like तो आप ये चेक कर सकते हो. तो क्राइटेरिया का नाम देना जरूरी है, बट आप देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्राइटेरिया में फॉर्मूला और नो क्राइटेरिया. इवन इफ यू वांटेड कि कुछ भी सिलेक्ट किए, कुछ भी चेक किए बिना भी अगर मैं आगे बढ़ सकता हूं तो यस आई कैन डू दैट. नो क्राइटेरिया सिलेक्ट करूंगा, नीचे का पूरा गायब हो गया. ये वर्क फ्लो पे नहीं होता था. वर्क फ्लो में सिलेक्टिंग वन रूल कंडीशन इज एसेंशियली इंपॉर्टेंट. ठीक है, वर्क फ्लो में सिलेक्टिंग वन रूल कंडीशन वाज एसेंशियली इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आप डिफरेंस साफ आपकी आंखों के सामने में है. इवन नो क्राइटेरिया, जस्ट एग्जीक्यूट द एक्शन, गो विद डायरेक्टली एक्शन विदाउट चेकिंग एनीथिंग. तो हो सकता है प्रोबेबली विद डू सम रिक्वायरमेंट ऐसा भी हो सकता है जहां पे हमें कुछ ना चेक करते हुए आगे प्रोसीड करने की जरूरत महसूस हो, तो वहां पे यू कुड गो विद दिस ऑप्शन. अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं है, मुझे ईमेल फील्ड को चेक करना है, सो आई एम गोइंग विद दिस. सो विच फील्ड, लेट्स गो विद द कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट की. अब देखो आपको लिस्ट में जाओगे, आप पूरी फील्ड लिस्ट आउट हो जाएगी. ठीक है, या फिर आप ऐसा अगर कुछ इनिशियल्स टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा. सो ईमेल फील्ड यहाँ पर ये आ गई है. जस्ट सिलेक्ट दिस एंड चूज. So what you want? Email field equals to, email field equals to, I actually want does not equals to. Does not equals to what? अब देखो यहाँ पे आप वहां कुछ नहीं लिख देते, यहाँ थोड़ा सा अलग है. स्ट्रिंग मतलब कोई वैल्यू चेक करना, फील्ड रेफरेंस यानी किसी और फील्ड से कंपेयर करना, फॉर्मूला मतलब कुछ फॉर्मूला, ग्लोबल कांस्टेंट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ. ये आ जाएगा, डोंट वरी. ये ऑप्शन डील करते करते आते हैं, डील करते करते. तो इसमें से कुछ ऑप्शंस अभी हम कर रहे हैं. फील्ड रेफरेंस भी सिलेक्ट करेंगे, स्ट्रिंग भी आएगा, कुछ में फॉर्मूला भी आएगा. तो दिस विद एवरी डिफरेंट यूज केस यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये ऑप्शन काय के लिए, ये ऑप्शन काय के लिए, है ना. सो ये हो जाएगा, डोंट वरी. तो व्हाट आई वांटेड टू सी, आई जस्ट वांटेड टू चेक कि भाई साहब ये जो फील्ड है दिस शुड नॉट बी ब्लैंक, वरना मेरा प्रोसेस बिल्डर जो है ना वो वेस्ट हो जाएगा. वन रिसोर्स इज गोइंग टू वेस्ट. सो आई डोंट वांट ईमेल फील्ड डज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, डज नॉट इक्वल्स टू null, does not equals to null. Empty string for the string, for the fields, for any of the field, it's like checking this null. Null मतलब वो चीजें खाली नहीं होना चाहिए. So this is what I wanted to say. This is my rule condition. ये है मेरा rule condition. ठीक है. So let's go with this. और कोई कंडीशन डालना है तो आप ऐड कर सकते हो. दो कंडीशन के बीच में आपको एंड चाहिए या और चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हो, या फिर अपना खुद का कस्टमाइज लॉजिक भी आप दे सकते हो. तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एडवांस है एज कम्पेयर टू दिस. लेट मी सेव विद दिस. तो मेरे कंडीशन भी ऐड हो गई है. अब यहाँ पे एक खास बात है, जैसे ही मैंने कंडीशन ऐड किया, यहाँ नीचे का एक और ब्लॉक बन के तैयार हो गया. मतलब ये चीज ना आपको सिर्फ प्रोसेस बिल्डर में मिलेगी. आपको वर्कफ्लो में ये चीज नहीं थी. वर्कफ्लो में एक ही रूल कंडीशन होता था. अगर रूल कंडीशन ट्रू है तो एक्शंस ऐड होंगे, अगर रूल कंडीशन फॉल्स है तो कोई दूसरा एक्शन ऐड नहीं कर सकते आप. सिंपल, आपका वर्कफ्लो जो है ना फायर नहीं होगा. दैट्स इट. रूल कंडीशन ट्रू है तो एक्शन, रूल कंडीशन फॉल्स है नो एक्शन. एक्शन नो एक्शन के बीच का फर्क था. सीधा वर्कफ्लो से बाहर आते थे. लेकिन प्रोसेस बिल्डर में ऐसा नहीं. वहां कैसे कि इफ दिस कंडीशन फॉल्स यू कुड प्लान फॉर द सेकंड कंडीशन. आप दूसरी भी कंडीशन चेक करके कोई नया एक्शन फायर कर सकते हो. इफ दिस फॉल्स, जैसे ये कर लोगे तो यहाँ पर एक और ऐसे ही ब्लॉक, ऐसे ही एक और ब्लॉक नीचे क्रिएट हो जाएगा. तो वर्कफ्लो में कैसा है कि यू कुड गो फॉर मल्टीपल सिलेक्शंस ऑफ दिस कंडीशन. एक से ज्यादा कंडीशंस भी आप चेक कर सकते हो, या तो कोई भी कंडीशन ना रखो, दैट इज ऑल्सो डन. और अगर कंडीशन रखते तो इवन फॉर द मल्टीपल कंडीशंस आल्सो यू कुड प्लान द वर्कफ्लो प्रोसेस बिल्डर्स. देखो ये एक नया ब्लॉक यहाँ पे ऐड हुआ और ये वर्कफ्लो पे नहीं होता है. तो अभी मेरा रिक्वायरमेंट इतना तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. आई जस्ट वांटेड टू सी कि भाई साहब वो ईमेल वाली फील्ड जो है ना वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए. इसके अलावा मेरे को फिलहाल कुछ और चेक नहीं करना है. सो आई एम गोइंग विद दिस ओनली. ठीक है. नाउ लेट्स ऐड द एक्शन इमीडिएट एट शेड्यूल. तो इमीडिएट ऑफ कोर्स ईमेल फायर आप जानते हो. अभी इसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करता कि ईमेल इमीडिएटली जाने चाहिए, शेड्यूल जाने चाहिए. तो आई जस्ट वांटेड टू इमीडिएट में जाके मैंने ऐड एक्शन किया है. ठीक है. व्हाट काइंड ऑफ एक्शन, देखो इतने सारी चीजें हैं.
You could call an Apex program. You could create a new record. You could fire an email जो मुझे करना है. Even you could call the flows also. कुछ आप chatter पे कर सकते हो. एक नई process को call कर सकते हो. Some quick actions, ठीक है. Some quick actions, ठीक है. Quick और quick के बीच में क्या फर्क है? This is an assignment for you guys. ठीक है. Send some sort of custom notifications. You could submit any of the process for the approval, record को approvals के लिए या फिर update the records. So these whole are the options. वहां सिर्फ 4 होते थे, यहाँ कम से कम इतने सारे options. अब count कर लेना कितने options हैं. I'm going for this email alert only. Okay, email alert. Let me select with this. So now give the name, like name is let me give the name as contact creation notification email alert. ठीक है. चलो, ये मैंने इस सेक्शन को नाम दिया. यू कुड गिव एनी नेम. अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या मांग रहा है. इट्स आस्किंग फॉर द ईमेल अलर्ट. कौन सी ईमेल अलर्ट? तो वी हैव क्रिएटेड दिस वन. एक अलर्ट अभी बनाई अपन. करना क्या है आपको, देखो इस पेज को मैंने जानबूझ के ओपन रखा. जब मैंने ये अलर्ट बनाया तो आई हैव गिवन दिस नेम, एपीआई नेम, यानी कि यूनिक नेम उसने अपने आप क्रिएट किया. जस्ट कॉपी दिस यूनिक नेम. जस्ट कॉपी दिस यूनिक नेम. उसको आप यहाँ लाके पेस्ट कर दो. यहाँ पे लाके उसको पेस्ट कर दो एंड जस्ट वेट फॉर सम टाइम. ठीक है. डिपेंड्स ऑन योर नेटवर्क स्पीड. देखो नीचे में नाम आ गया. जस्ट सिलेक्ट दिस. हो गया. दैट्स इट. यहाँ पे आपको वो ईमेल अलर्ट का नाम कॉपी करना पड़ता है व्हाट यू हैव क्रिएटेड. तो ये पेज को ओपन रहने देना और इसमें से यूनिक नेम को कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना. राइट. हो गया. वो अपने आप नीचे में नाम आ जाता है, उसको सिलेक्ट कर लेना. दैट्स इट एंड सेव दिस. ये R&D है. ये दिस इज समथिंग विच अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. ठीक है. ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की इसमें बता रहा हूँ मैं आपको. ये मेरा तरीका है काम करने का. मैंने हमेशा ऐसा किया, उससे मेरे को आसानी होती है. पीपल माइट हैव सम डिफरेंट प्रोसेस फॉर दिस. कुछ लोग टाइप करते हैं, रुकते हैं, फिर वो आता है, फिर सिलेक्ट करते हैं. आई जस्ट यूज टू डू दिस. आई कीप इट वेरी सिंपल. मैं ये पेज ओपन रखता हूँ, ये कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, थोड़ा देर रुक जाता हूँ, अपने आप नाम आता है. एक आध सेकंड पे भी लगता है उसको. अब मैं वहां से सिलेक्ट करता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ. दिस इज माई वे टू डू दिस. ठीक है. आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो. चलो, ऑब्जेक्ट ऐड किया, रूल ऐड किया, एक्शन ऐड किया और सब कुछ कहाँ किया? एक ही पेज पे किया. डिड आई माइग्रेटेड फ्रॉम दिस पेज टू एनीवेयर एल्स? नो no no no. Everything whatever I have done it on the same canvas. Right. Okay, time to activate this. Activate कहाँ करना? बस यही करना. There's a button, activate button. Just click this button and it will ask you कि अगर देखो इस ऑब्जेक्ट पे कोई और प्रोसेस है तो वो वाला डीएक्टिवेट हो जाएगा and this is going to be activated. I don't have any problem with this. Let me confirm this. हो गया. That's it. That's it. You wanted to see, go to this view all process. One process with this name, new contact creation notification with this description on this object contact has been added and it is in the active status. Okay, so when this process is going to be get fired, whenever I create any new, let me refresh this so that it will going to load with the fresh data. So I'm going to create a new contact. This will fire in the backend automatically. So let me create this. Test contact record creation via process. ठीक है. And let me further give this email ID as to be Sfdc asim@gmail.com. Rest of the things it has been taken. I'm going with and because I don't have time, I'm just keeping this whole blank. And the lead sources like web or ठीक है. I'm going with this whole. Let me save this. So one new contact is being created. Then as soon as a contact is being created, one email should be fired on this my email ID. Let me now go to my email ID and let me check out whether I got this email from this process builder or not. Okay, so this is the email. Congratulations, test contact via process has been created successfully and you got this email. Okay, that's it. Guys, this is the way, this is the way to create a process builder. Now, every one of you go with this example. Go with this, the first example. And tomorrow I'm going to start. Yeah, you have assignments also. Oh, that's great. करते तो हो नहीं यार आप लोग. करोगे तो ये email ID पे दे देना मेरे. Acknowledgement. Configure the process to send the email notification for candidate object and for new case record. ठीक है? With the high priority. Only high priority cases के लिए email जाना चाहिए.
So you need to add one condition. ठीक है, यहाँ पे condition है, यहाँ पे कुछ नहीं है, but here you require to check for the high priority cases only the email notification should be sent. So go with these two assignments. Tomorrow I'm going to start with this, creating a new record. I'm going to start from here. Let me stop the recording first.